हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। क्या हाल है जी? ठीक ठाक, सब खैर खैरियत से हैं? यस ओके सर। जी, सब ओके जी, शुक्र ओके है। जी, थैंक यू। So today we are starting lecture 6 of week 6. Uh, so I opened the slides. I assigned you an assignment. Have you submitted it? यस सर। सर Okay. सर जी, सर मैं कल असाइनमेंट जमा कर रहा था सर, ये तो पता नहीं वो गूगल ड्राइव में फाइल वो अपलोड नहीं हो रहा था सर, तो मैंने आपको ईमेल के जरिए भेज दिए असाइनमेंट पीडीएफ फॉर्म में। अच्छा, चलिए आप आज अगर वो आपने सबमिट किया है तो आप दोबारा कोशिश करें, उस पे करें ताकि मेरे पास डेटा अवेलेबल हो। कल कल मैंने किया था। ठीक है, आज दोबारा फोल्डर पे करें। ठीक है ठीक है सर, जी। अगर हो गया तो ठीक। ठीक हाँ, है। किसी से पूछ ले तरीका तो वो आपको बता देंगे। नो सर, वो मैंने पहले भी असाइनमेंट सबमिट किए इस तरह, लेकिन अभी सर जी इस तरह नहीं हो रहा था कल जब मैं बहुत ट्राई की। अच्छा, चलिए दोबारा आप कोशिश करें ताकि मेरे पास एक फोल्डर में चीज़ें आ जाए तो मेरे जहन में होगी ना। ठीक है सर, मैं कोशिश करता हूँ। ओके जी, थैंक यू। सो Excuse me, sir. let's take start. Excuse me, Now sir. 21 students, yes. सर मेरा वाला भी गूगल क्लासरूम में अपलोड नहीं हो रहा सर। तो आप दोबारा कोशिश करें ताकि मेरे पास एक जगह पे आ जाए। आपने मुझे ईमेल किया है वैसे। नो सर, सर मेरे हर असाइनमेंट में ये मसला है सर, गूगल ड्राइव में सेव नहीं होता। अच्छा, यस सर। चले आप मुझे वैसे मेल भी कर ले और उसके बाद फिर ड्राइव पे कोशिश भी करें। ठीक है जी। सही है, सही है। ओके जी। So now it's 21 student in this class, and time is now 8:07. So this is our 6th week lecture. The contents of this lecture is Cauchy-Euler equation, undetermined coefficient method, and nonlinear equations. So before this, we have studied that. If you remind some things, we have studied that if you have a second order homogeneous differential equation and you have two solutions for that homogeneous differential equation, and both the solutions are linearly independent, so their linear combination will also be the solution of that differential equation. So again I am repeating, if you have a homogeneous second order differential equation and you have two solutions for that differential equation, so if these two solutions are linearly independent, so its linear combination will also be the general solution for that differential equation. Now, what is how to check that two functions are linearly independent or dependent? For this, you will take the linear combination equal to 0. If all the scalars are 0, so it means that these functions are linearly independent. If at least one scalar is non-zero, so we can say that these functions are linearly dependent. Another way is by finding the Wronskian matrix. If Wronskian matrix is non-zero, so it will be linearly independent. Another thing was if you have a second order differential equation, homogeneous second order differential equation. I am talking about homogeneous in previous class. So if you have homogeneous second order differential equation and you have a first solution for that differential equation, how to find another solution? So for this we find an unknown function u, whose formula is 1 over y square e power minus px into dx integral.
So after finding u, you multiply this unknown function u with the y1 first solution, so you will obtain the second solution. And the third thing which we have studied, that if you have second order differential equation with constant coefficients, so how to find both the solutions. So in that case, we have considered that solution will be in the form of exponential function, and if you put the exponential function in the given differential equation, you obtain a characteristic equation, and if you solve the characteristic equation, you obtain two roots of algebraic equation. So we studied three cases when the roots are real and distinct. What we will do, how to write the solution, and when the roots are real and repeated, how to write the solution. If the roots are complex, how to write the solution. So ये चीजें हमने पहले पढ़ी थी, if you remember, याद है जी? जी सर याद है जी थोड़े बहुत अच्छा जी. Now we are studying the Cauchy-Euler equation. The Cauchy-Euler equation is some type of special type of equation, differential equation. The undetermined coefficient method. Undetermined coefficient, we will study this method for finding the particular solution, for finding the solution of non-homogeneous differential equation. So this method is used for finding the solution of non-homogeneous differential equation. Previously हमने homogeneous equations पढ़े हैं. So इस method के through हम non-homogeneous equations भी पढ़ सकेंगे. So now first, what is Cauchy-Euler equation? Cauchy-Euler equation. So let's take start from board. Suppose you have this is a second order ax square dy by dx, sorry, d square y by dx square. Let's suppose I am writing at y double dash, क्योंकि d square y थोड़ा लिखने में complicated है. So I am writing ax square y double dash plus bx y dash plus cy. This is equal to this is equal to either gx or 0. So if this is 0, this is homogeneous. If this is gx, so this is non-homogeneous. You know about this. This is equation number 1. Suppose. So if with y double dash there is a product of x square, with y dash there is a product of x, and if there is no derivative, there will be no x. So such type of differential equation is said to be Cauchy-Euler equation. If with y double dash there is x, there must be x square. There must be x square. If there is x, so this equation will not Cauchy-Euler equation. There must be x square with y double dash. If there is y triple dash, there must be x cube with its product. If there is y dash, there must be x. If there is no y dash, there will be no x. समझ में आ रहा है ना जी? जी सर. अच्छा जी, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं ए एक्स क्यूब वाई ट्रिपल डैश प्लस बी एक्स स्क्वेयर वाई डबल डैश, बी एक्स स्क्वेयर वाई डबल डैश, तो प्लस सी एक्स वाई डैश. So this is also Cauchy-Euler equation, but this is of third order, because with y triple dash there is x square, x cube. With y double dash there is x square. With y there is x. There is, sorry, this is y dash. If there is no y dash, there is no x. So this is also Cauchy-Euler equation. So if there is y4 dash, there must be x power 4. If there is y5 dash, so there must be x power 5. So this is, you can see it, this is a simple equation. So
now the question is how to search the solution. How to search the solution? आपने ये इक्वेशन पढ़ा था, if you remember, a y double dash plus b y dash plus c y, this is equal to 0. ये आपने पढ़ा था. This is homogeneous equation with constant coefficients. A, B, C are constants. So इसका solution हमने कैसे कंसिडर किया था, याद है आपको? y is equal to e पावर mx फॉर्म में हमने कंसिडर किया था, याद है? यस सर। अच्छा जी, हमने क्यों कंसिडर किया था? इसलिए कंसिडर किया था कि y का अगर डैश भी लेंगे, डबल डैश भी लेंगे, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन खुद डिस्टर्ब नहीं होगा, सिर्फ साथ में एक कोएफिशिएंट इंक्रीज होता जाएगा. पहले डेरिवेटिव में m आ जाएगा, लेकिन एक्सपोनेंशियल फंक्शन वही होगा. नेक्स्ट डेरिवेटिव में y डबल डैश आ जाएगा, बट e पावर mx will be same with coefficient m square. So if you put the value of y, this is y. So if you put, so there will be e power mx, there will be also e power mx, there will also e power mx. So if you take e power mx common, so अंदर ब्रैकेट में जो वैल्यू रह जाएगी वो एक अलजेब्राइक इक्वेशन होगा. समझ आ रहा था ना? यहाँ पे a m स्क्वायर आएगा, यहाँ पे b m आएगा, यहाँ पे c इज इक्वल टू 0 आ जाएगा. याद है जी? जी Yes, सर, sir. क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा जी, ठीक है. जी. लेकिन इस इक्वेशन 1 जिसको हम कॉशी यूलर इक्वेशन कहते हैं, अगर इसका भी सॉल्यूशन y इज इक्वल टू e पावर mx में हम कंसिडर करें, तो यहाँ पे भी e पावर mx होगा, यहाँ y डैश में भी होगा, y डबल डैश में भी होगा. लेकिन इस x और x स्क्वायर के साथ क्या करेंगे, ये अब प्रॉब्लम बन गया. वहाँ पे तो x स्क्वायर नहीं थे, वहाँ पे तो a m स्क्वायर b m, यहाँ पे अगर करेंगे तो a x स्क्वायर m आ जाएगा, सॉरी a x स्क्वायर m स्क्वायर, bxm प्लस c इज इक्वल टू 0. लेकिन ये तो इसके साथ क्या करेंगे, इसमें तो अननोन ज्यादा बन गए. x भी अननोन होगा और m भी अननोन होगा, तो एक इक्वेशन से दो अननोन कैसे फाइंड कर सकते हैं? नहीं होगा ना. अगर हम इसका सॉल्यूशन y इज इक्वल टू एक्स पावर m फॉर्म में कंसिडर करें, अब देखें y डैश क्या बनेगा. हमारा काम ये है कि एक ऐसा फंक्शन कंसिडर करें ताकि ये एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होके y डबल डैश में ये क्या बन जाएगा, y डैश में क्या बन जाएगा, m x m माइनस 1 बन जाएगा. y डबल डैश में क्या बनेगा, y डबल डैश में ये बन जाएगा m इंटू m माइनस 1, m इंटू m माइनस 1 x पावर m माइनस 2. सो अब देखिए y डबल डैश को जब आप पुट करेंगे तो ये x पावर माइनस 2, x पावर m माइनस 2, ये x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो इट विल बिकम x पावर m. और इस y डैश में चूंकि x का एक पावर कम हुआ होता है, सो x मल्टीप्लाई में अगर हो तो ये x पावर m कंप्लीट कर लेगा. सो जब हम इन वैल्यूज को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो ये फंक्शन आपको देगा a m इंटू m माइनस 1 this is what, plus this is b m plus c, this is x power m equal to 0. ये नहीं बनेगा. जी सर. ओके जी. दिस इज am स्क्वायर प्लस b माइनस a m
प्लस सी इक्वल टू 0। एक्स पावर एम तो 0 नहीं हो सकता ना, एक्स पावर एम को हमने सॉल्यूशन कंसिडर किया है, जिस तरह वहां पे ई पावर एम एक्स को कंसिडर किया था, यहाँ पे एक्स पावर एम को क्या है। सो एक्स पावर एम कैन नॉट बी इक्वल टू 0, सो इट मींस दिस इज इक्वल टू 0। जिस तरह वहां पे इक्वेशन बना था ए एम स्क्वायर, इफ यू रिमेंबर, ए एम स्क्वायर प्लस बी एम प्लस सी इक्वल टू 0, यहां पे अब ये बना ए एम स्क्वायर प्लस बी माइनस ए एम प्लस सी इक्वल टू 0। इस बी की जगह वहां अब इसमें बी माइनस ए आया। इस इक्वेशन को हमने क्या नाम दिया था, याद है? करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ए एम स्क्वायर वाले को हमने करेक्टरिस्टिक इक्वेशन का नाम दिया था, इफ यू रिमेंबर। दिस इज ए एम स्क्वायर प्लस बी एम माइनस 1, दिस इज करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। लेकिन अब इसको काशी जो है दूसरा नाम दे रहे हैं, इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन का नाम दे रहे हैं। इक्वेशन 2 इज नॉन एज, क्योंकि इसने इस टाइप के इक्वेशन पे काम किया था तो उन्होंने उसको अपनी मर्जी से नाम दिया ऑक्सिलरी इक्वेशन। दिस इज कॉल्ड ऑक्सिलरी इक्वेशन, दिस इज कॉल्ड ऑक्सिलरी इक्वेशन। यहां तक समझ आ रहे हैं जी? जी सर, आ रही है सर। अच्छा जी, अब इसके कितने रूट्स होंगे? इस ऑक्सिलरी इक्वेशन के 2 रूट्स होंगे, इसके 2 रूट्स होंगे। अगर अगर m और n, m1 और m2, अगर m1 और m2 अगर आपके पास रियल भी बने और डिस्टिंक्ट भी बने, तो कौन मुझे बता सकता है कि सॉल्यूशन को, जनरल सॉल्यूशन को हम कैसे लिखें? चलिए मुझे आप ये बता दें कि एक सॉल्यूशन क्या होगा अगर m1 और m2, x पावर m1 नहीं होगा एक सॉल्यूशन। दूसरा सॉल्यूशन क्या होगा? y2, x पावर m2 नहीं होगा, बिकॉज अब हमने सॉल्यूशन x पावर m फॉर्म में कंसिडर किया है, x पावर m फॉर्म में। तो m1 m2 अगर आ गए तो एक सॉल्यूशन x पावर m1 होगा, दूसरा x पावर m2 होगा। लेकिन उस केस में हम e पावर mx में पुट करते थे वैल्यूज, क्योंकि वहां पे e पावर mx फॉर्म में हमने कंसिडर किया था सॉल्यूशन। यहाँ पे x पावर m1, x पावर, सो y क्या बनेगा जनरल सॉल्यूशन? c1 x पावर m1 प्लस c2 x पावर m2, ये बन जाएगा ना सॉल्यूशन। समझ आ रहे हैं जी? जी सर। अच्छा जी, वहां पे c1 e पावर m1x होता था, क्योंकि वहां पे सॉल्यूशन e पावर mx फॉर्म में हमने कंसिडर किया था। यहाँ पे x पावर m है तो x पावर m1 होगा। नाउ सेकंड इज व्हेन द रूट्स आर रियल एंड सेम, m1 और m2, m1 अगर इक्वल हुआ m2 के, तो इन दोनों को मैं सपोज m वैल्यू दे रहा हूं, व्हाट m, क्योंकि सेम वैल्यू है। सो अगर दोनों सेम हुए सो फिर y कैसे होगा, ये नोट करें। वहां पे कैसे होता था, याद है? c1 प्लस c2x होता था ना, और e पावर mx, लेकिन यहाँ पे x पावर m होगा, क्योंकि सॉल्यूशन अब यहाँ पे log ऑफ x होगा, नॉट x, यहाँ पे log ऑफ x होगा। इसका आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्यों ऐसे आया। सो ऑक्सिलरी इक्वेशन में अगर रूट्स सेम आ जाए तो सॉल्यूशन लिखेंगे c1 प्लस c2 log ऑफ x, x पावर m। क्यों? देखिए, अगर रूट्स सेम आ गए तो एक सॉल्यूशन आपको मिला y1,
आपको दो सॉल्यूशंस नहीं मिले, आपको y1 मिला। वो क्या मिला? वो x पावर m आपको मिला। लेकिन y2 कैसे होगा? अब y2 आप जब फाइंड करेंगे तो y2 तो आपका uy1 होगा, uy1 होगा। अब y1 तो आप ऑलरेडी आपका xm है। अगर u फाइंड हो जाए तो u इस केस में log ऑफ x होगा। अगर आप फाइंड करेंगे भी तो u आपका क्या होगा? log ऑफ x होगा। उस केस में u आपका x आया था। अच्छा, u फाइंड कैसे करेंगे कि log ऑफ x है या नहीं है? तो u इज इक्वल टू व्हाट? दिस इज 1 ओवर y1 स्क्वायर e power what? Minus p into dx. Yes. So what is y1? Y1 is x power m. So y1 square will become x power 2m. And what is p? What is p in this question? कौन बता सकता है? चलिए ये आप मुझे कोई भी स्टूडेंट बता दे, what is p? What is p in equation 1? b minus a. नहीं, p की वैल्यू बता रहा हूँ सर bx। सर जी? ln of x। नहीं C1 plus C2 ln of x। नहीं, p is b माइनस नहीं, p जो होता है वो हमेशा कोएफिशिएंट ऑफ क्या होता है? y डैश का कोएफिशिएंट होता है। लेकिन पहले आप y डबल डैश जो हायर ऑर्डर हैं उसके कोएफिशिएंट पर डिवाइड करें, सो फिर आपको p मिल जाएगा। सो दिस इज bx बाई ax स्क्वायर। दिस इज योर p। सो दिस इज b बाई ax। दिस इज योर p। अब समझ में आया? जी, सर ये कैसे डिवाइड हुआ? एक स्क्वायर पे bx डिवाइड divided करें, एक स्क्वायर पे डिवाइड करें तो y डैश का जो कोएफिशिएंट आ जाए उसके बाद वो आपका p होगा। जनरल सेकंड ऑर्डर इक्वेशन क्या होता है? y डबल डैश प्लस पी एक्स वाई डैश प्लस क्यू एक्स इक्वल टू 0। सो y डबल डैश का कोएफिशिएंट पी एक्स सिलेक्शन के दौरान 1 होना चाहिए। ये क्लियर हुआ जी? जी सर। अच्छा जी। सो अगर आप u फाइंड करेंगे तो log x होगा। सो अगर u log x बना तो आपका y2 क्या बन जाएगा? चलिए ये बता दे। ये log x बना, ये आपका x पावर m है, तो इन दोनों का मल्टीपल बन जाएगा ना y2। जी सर। अच्छा जी, अगर इन दोनों का मल्टीपल बना तो ये क्या है? y में मैंने क्या लिखा है? वही लिखा है ना मैंने। जी सर ऐसे ही। अच्छा जी। सो इट मीन्स कि ये अपने साथ इक्वेशन 2 अपने साथ याद रख ले। अब सिमिलर इज द केस व्हेन द रूट्स आर कॉम्प्लेक्स। तो ये नोट करें अपने साथ कि what will be the solution if the roots are complex. So case third is when m1 is equal to suppose alpha, चलिए मैं m को सेम लिख रहा हूँ, when m is not m1, मैं इसको डायरेक्टली ऐसे लिख रहा हूँ, m is alpha प्लस माइनस आयोटा बीटा। अगर रूट्स ए से आ गए तो फिर y कैसे होगा? वहां पे याद है आप क्या लिखते थे? e पावर अल्फा x, लेकिन यहाँ पे x पावर अल्फा होगा क्योंकि बिकॉज नाउ सॉल्यूशन इज इन द फॉर्म ऑफ x पावर m। वहां पे आप अंदर क्या लिखते थे ब्रैकेट के अंदर? c1 cos ऑफ व्हाट? बीटा
x लिखते थे ना, प्लस C2 साइन ऑफ बीटा, क्या लिखते थे वहां पे, x लिखते थे। सिर्फ यहाँ पे x की जगह जिस तरह वहां पे log ऑफ x आया C1 प्लस C2 log ऑफ x, तो यहाँ पे भी बीटा x की जगह बीटा log x होगा। सो दिस इज आवर थर्ड केस सॉल्यूशन व्हेन द रूट्स आर रियल एंड कॉम्प्लेक्स। ये क्लियर हुआ जी? यस सर। अच्छा जी, अब तीनों सॉल्यूशंस अपने साथ जहन में रख ले और हम एग्जाम्पल की तरफ जाने लगे हैं। हाउ टू सॉल्व द इक्वेशन व्हेन द रूट्स आर, सपोज दिस इज व्हाट, दिस इज प्लस c, this one is what, अच्छा जी, this is x y dash, this is suppose 2, this is what, this is suppose 3, and this is suppose 2. So 2x square, suppose this is 2x square. So this is Cauchy-Euler equation or not? जी सर है। Yes. So हम लिख लेंगे equation 1 is Cauchy-Euler equation. Equation 1 is मैं इसको थोड़ा सा सिंपल लिखूंगा, Cauchy-Euler equation. So CE into E लिख लूंगा। So how to select the value of A? The value of A is with the higher order coefficient, that is 2. B as what? 3. What is C in this case? C as 2. C2 बना ना? So what is auxiliary equation? Auxiliary equation क्या होगा? Auxiliary equation will be same. That is AM square. Remember this auxiliary equation, AM square plus B minus AM. If you remember, this is general auxiliary equation for every second order differential equation. B minus AM plus C, this is equal to 0. This is general equation for every second order Cauchy-Euler equation. So what is A? A is 2. This is 2m square. What is B? B is 3. What is A? A is 2. So 3 minus 2 is 1. So this will become plus 1m. And what is C? The value of C is 2. So this will give you 0. So it means this is now quadratic equation. This is quadratic equation. So its roots will be either real and same, real and distinct, or maybe its roots are complex. So मैं आपको इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं हम एग्जैक्टली, मैं इसके रफ वैल्यूज बता रहा हूँ। सो अगर suppose maybe one value of m1 is rough work है, ठीक है जी, this is rough work, this is not exact value for this differential equation. So अगर m1 की वैल्यू 2 आ गई इस इक्वेशन से और m2 की वैल्यू आपके पास 3 आ गई, सो हाउ टू राइट द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे? y होगा इक्वल c1 x पावर m1, सो c1 x स्क्वायर plus c2 x cube, c2 x cube. This will be the solution. Maybe m1 is 2, maybe m1 is suppose 4, and m2 is also 4. अगर दोनों सेम आ गए, so how you will write the solution? This will be y is equal to c1 plus c2 log of x into whole multiplied by x power m means x power 4. ठीक है जी,
maybe the roots are m is equal to 2 plus minus 3 iota. Maybe the roots are 2 plus minus 3 iota. So how you will write the solution? So solution will be x power alpha. X power alpha means x square, and c1 cos of what? Beta. Beta is 3 in this case. Beta log of x, and plus c2 sine of 3 log of x. So this will be the solution. अलजेब्राइक इक्वेशन जितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाए हम उसको सॉल्व कर सकते हैं. सो अगर वो सॉल्व हो जाए डिपेंड करता है रूट्स पे. सो अकॉर्डिंग टू दैट यू विल राइट द सॉल्यूशन. समझ में आ रहा है जी? जी सर. जी हेलो. जी सर, आगे है सर. अच्छा जी, थैंक यू. नाउ दिस वन इज द सपोज मैं इसको मिटा रहा हूँ. दिस इज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. So let's move towards the slides. The slides हमें क्या कह रहे हैं? मैंने यहाँ पे बोर्ड पे सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया. अब स्लाइड पे आपको मुश्किल नहीं होगी. बोर्ड पे थोड़ा सा लिखना भी मुश्किल होता है, लेकिन समझ आपको मेरे ख्याल में अच्छी तरह आती है. इसलिए हम ज़्यादा टाइम बोर्ड पे ही गुजार लेते हैं. So now Cauchy Euler equation. Cauchy Euler equation is this one. With the nth order derivative, this is general one. With the nth order derivative, there must be xn. With the n minus 1 order derivative, there will be xn minus 1. So मैंने इसी तरह ही आपको एक्सप्लेन किया था, if you remember. So ये कह रहे हैं कि if you take n is equal to 2 means second order, and you put y is equal to x power m, so you will obtain this equation am square. ये हमने अभी किया है ना बोर्ड पे. जी बिल्कुल सर. अच्छा. तो ये कह रहे हैं कि this equation is known as auxiliary equation. So if the roots of this equation are real and distinct, so y will become y is equal to c1 x power m1 plus c2 x power m2. So this is an example. This is Cauchy Euler equation or not? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Because with with y double dash there is x square, with y dash there is x, and the third term there is no derivative of y, so there is no x. What is the value of a in this case? 1. 1. Because ax square y double dash is in general equation. So a is 1, b is minus 2, c is minus 4. So how to write the auxiliary equation? Sorry, not auxiliary equation. Auxiliary equation. Auxiliary equation, you will write auxiliary equation for the Cauchy Euler equation, and you will write the characteristic equation for coefficient whose coefficient are constant. So in this case, you will write the auxiliary equation. Auxiliary equation is what? Am square plus b minus am plus c equal to 0. This one, am square. This is for every second order homogeneous differential equation. This is for every second order. But if it is Cauchy Euler equation. So now equation 1 is Cauchy Euler equation. So its characteristic auxiliary equation will be am square, but a is 1. So this is m square minus b minus a minus 2 minus 1 is minus 3m minus 4 plus c is minus 4. So the values are minus 1 and 4. So what will be solution? Y is equal to c1 x power minus 1 plus c2 x power 4. This is when roots are repeated. So solution will be c1 plus c2 log x power m1. ये समझ आ रहा है ना?
जी सर. अच्छा जी. So this is another example. This is Cauchy-Euler equation because with y double dash there is x square, with y dash there is x, and if there is no derivative there is no x. So the value of a is 4, the value of b is 8, the value of c is 1. So if you write the values of a, b, c and the general auxiliary equation, which is am square plus b minus am plus c equal to 0. So you will get 4m square plus 4m plus 1. Now what is the value of m? If you solve this algebraic equation, you will obtain m is equal to minus 1 by 2 and minus 1 by 2. So what will be the solution? C1 plus C2 log x and take x power minus 1 by 2 common. So same. Now if the roots are complex, so the solution will be what? Y is equal to x power alpha. C1 cos beta log x plus C2 sin beta log x. ये ऐसे ही आ रहे हैं अगर आप x पावर अल्फा C1 x पावर x पावर m और m1 और C2 x पावर m2 पुट करें and you simplify it, so you will get at the end this expression. So ये थोड़ा सा आप 2 स्टेप करके ये आप लास्ट स्टेप पे पहुंच जाएंगे. y is equal to x पावर अल्फा C1 cos beta x C2. So स्लाइड को ऊपर देख लेंगे. So now this is Cauchy-Euler equation or not in example 3? Yes sir है. Because with y double dash there is x square. So y dash के साथ b क्या होगा? 0 होगा ना. So if you solve it, you will get two values of m, which is what? M is plus and m is minus. So दोनों आ जाएंगे. 1 by 2 plus 2 iota and 1 by 2 minus 2 iota. इसको मैं ऐसे represent कर रहा हूँ. So this will become y is equal to x power alpha is 1 by 2 actually. So x power alpha means x power 1 by 2. C1 cos of beta is 2 in this case. So beta log x and this one. Initial condition use करें, you will get this constant. ग्राफ करने की ज़रूरत नहीं है. Now this is third order. ये आप खुद कर लेंगे. Now the another thing. अच्छा इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं है आपको? Any question? क्लियर है सर. अच्छा जी. सर ये जी थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में ये आयलर कॉशी आयलर इक्वेशन में किस तरह थर्ड ऑर्डर में सॉल्यूशन होगा? आप जब y is equal to x पावर m पुट करेंगे तो आपको थर्ड ऑर्डर और जब थर्ड डिग्री अलजेब्राइक इक्वेशन मिल जाएगी. ऑक्सिलरी इक्वेशन हम इसका नहीं लिख सकते, डायरेक्टली y is equal to x पावर m पुट करेंगे. सर लेकिन वहाँ तो m की 3 वैल्यूज आएंगे ना सर, क्योंकि थर्ड ऑर्डर है तो इसकी 3 वैल्यूज आएंगे, तो फिर कैसे पुट करेंगे? वहाँ तो x1 और x2 है सर. This is x cube y triple dash, this one suppose, plus 2x y double dash suppose. This is plus this is x square. This is x into y dash suppose. Plus y, this is equal to 0. So now this is third order. So if you put y is equal to x power m, तो मैं थोड़ा सा एक दो स्टेप कम कर रहा हूँ. y is equal to x power m. So you also take y dash, y double dash. मैं थोड़ा सा उसको डायरेक्टली लिख रहा हूँ. y dash, y double dash, y triple dash. ये आप जब कर लेंगे, so you put the values in equation 1, you will get what? m square, m cube. Sorry, this will become m. क्या बन जाएगा? कौन बता सकता है? This will become m minus 1 into m minus 2 plus 2m into m minus 1
plus what? This is only m plus 1 equal to 0. ऐसे इक्वेशन होगा, x पावर m कॉमन आ जाएगा इक्वल टू 0, ये होगा। ये होगा ना। सपोज मुझे मिला जी m, होगा सर शायद। अच्छा जी, m क्यूब प्लस 2m स्क्वायर, मैं अब मल्टीप्लिकेशन नहीं कर रहा, इस पे वो टाइम ज़ाया नहीं कर रहे, प्लस 2m स्क्वायर प्लस 3m, सपोज प्लस 1 मुझे मिला इक्वल टू 0, ये मिल जाएगा ना। सपोज ये मिला, सो ये थर्ड डिग्री अलजेब्राइक इक्वेशन है। इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? सिंथेटिक डिवीजन यूज करेंगे ना। सर पहले sir. आप m को अपनी मर्जी से वैल्यू दे दे, पहले m 0 दे दे, अगर ये सेटिस्फाई हो जाए तो m 0 इसका रूट बन जाएगा, फिर अगर नहीं हो रहा तो m 1 दे दे, फिर m माइनस 1 दे दे, फिर 2 दे दे, फिर माइनस 2 दे दे, एटलीस्ट आपको एक ऐसा रूट मिल जाएगा जिस पे ये सेटिस्फाई हो जाएगा। तो जिस पे सेटिस्फाई हो जाए तो आप उस रूट को यहाँ पे लिख ले, फिर इनके कोएफिशिएंट्स लिख ले। m क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है? 1 है। m स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2 है, फिर ये 3m बन जाएगा 3। दिस इज व्हाट? दिस इज 1। पहले इसको ऐसे ही लिख ले, फिर 2 को मल्टीप्लाई करे, दिस विल बिकम व्हाट? सो ये प्रोसेस चलता जाएगा। सो यहाँ पे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा, उसको सॉल्व कर लेंगे। सो अलजेब्राइक इक्वेशन थर्ड ऑर्डर कैसे सॉल्व होता है? सो दिस इज द प्रोसीजर। ये क्लियर हुआ जी? जी अच्छा जी, अब आप एक काम करें, मुझे आप ये इक्वेशन सॉल्व करके दे दे। if this is this one is suppose this is y double dash, this is y dash, this is y, and this is equal to 0, so equal to 0, this one is, this is x। चलिए ये इक्वेशन दे दें, सॉल्व करके दे दें। इसका सॉल्यूशन निकाल लें। आपके पास पेजेस पड़े हैं ना? अब मैं हर एक से 3 मिनट के अंदर अंदर इसका सॉल्यूशन चाह रहा हूँ। चलिए 4 मिनट ले ले, लेकिन मुझे मेरे साथ कितने स्टूडेंट हैं? 30 स्टूडेंट्स हैं अभी। सो 30 स्टूडेंट ने मुझे इसका आंसर देना है विद इन 4 मिनट। शाबाश। और मुझे आपने इसमें इसका सॉल्यूशन जो है लिखना है। सर नजर नहीं आ रहा, आप जो स्लाइड दिखा अच्छा, रहे। ये आप लिख लें एंड विद इन 4 मिनट मुझे आप आंसर दे दें, और आंसर आपने मुझे मैसेज पे देना है। ठीक है जी, चैट पे आपने मुझे मैसेज देना है, तो मुझे पता भी चल जाएगा कि अभी आप इसको कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और एक दूसरा ये है कि कभी कभी स्टूडेंट्स आप मोबाइल रख के चले जाते हैं, इसका भी पता चल जाएगा कि अब कितने स्टूडेंट मेरे साथ हैं। तो चैट पे मुझे आप आंसर दे दें इसका। शाबाश।
अच्छा एक बात सुन ले, पहले आपने इसको x पे डिवाइड करना है, ठीक है, उसके बाद ये कॉशी यूलर इक्वेशन बनेगा। ये क्लियर हुआ ना? ऐसे ना हो कि आप डायरेक्टली इसको कॉशी यूलर इक्वेशन कह दें। चले जी आंसर स्टार्ट कर लें। जी आंसर आ गया। जी हेलो। जी सर बस 1 मिनट। अच्छा चलिए शाबाश। अच्छा एक स्टूडेंट ने लिखा है दिस इज नॉट कॉशी यूलर इक्वेशन। तो दिस इज कॉशी यूलर इक्वेशन इफ यू डिवाइड इट बाय एक्स। ठीक है जी, तो ये बन जाएगा और फिर आप सॉल्व कर लेंगे। जी इतने टाइम का क्वेश्चन नहीं था, आपने काफ़ी टाइम लगा लिया। So one student say that the roots are real and repeated, that is minus 1 is the root. Another student say that the root is 2 plus minus 2 iota. The roots are 2 plus minus 2 iota according to a solution. And two students say that the roots are same and the root is minus 1. So बाकी student का क्या है? The complex roots are imaginary. So what are its roots? Complex roots. Roots are complex.
So what are the values? सर आयोटा किससे लिखा जा सकता है? या तो लिखा ही नहीं देता। आयोटा लिखे, आयोटा आयोटा उर्दू में लिख ले, इंग्लिश में लिख ले। -1 + -√3 आयोटा डिवाइड बाय 2। अच्छा, तो सबके साथ डिफरेंट आ रहे हैं। मेरे ख्याल में आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि सबका नो डिफरेंट। सर, ये रूट्स हैं सर जो इसने बताए हैं, यही है। दो रूट्स -1 + -√-3 आयोटा बाई 2। अच्छा, ये किस किस के साथ आ रहे हैं, कितने स्टूडेंट्स के साथ? मेरे साथ। अच्छा, और किसी के साथ आ रहे हैं? ये सलमान के साथ आ रहे हैं यस ना? सर। जी सर। अच्छा, ओके। और सर किसी के? सर CO मेरे जी। साथ m = -1/2 ± 3/2 आयोटा। मेरे ख्याल में यही ठीक रहेगा। और स्टूडेंट के साथ ये आ रहे हैं? मेरे पास सर -1 और 2 ± आयोटा। ये आप दोबारा चेक करें। अच्छा, आप इसको तो कर लेंगे। चले आप मुझे ये कर ले कि अपने अपने माइक जो हैं, सारे अपने माइक ऑन कर ले ताकि मुझे पता चले कि कौन कौन अब मेरे साथ हैं। जी जी सर जी। उमर शहजाद। यस सर। अच्छा, अहमद तारिक। अहमद तारिक, उमर शहजाद, माइक ऑन कर ले। अहमद तारिक। यस सर। अच्छा जी। जान खान यस सर। ऑन कर ले। फहद अली, जलाल बशीर, जुनैद शाह, जलाल बशीर। जुनैद शाह। अच्छा, जलाल बशीर। जलाल बशीर नहीं है। खुशियामुल हसन, महमूदुल हसन। Yes, sir. अच्छा, ऑन कर लो। महमूदुल हसन, मोहम्मद अब्बास खान, मोहम्मद हारिस, सादुल्लाह। Yes, sir. अच्छा, सोफिया सरवर। अपना माइक ऑन कर। Yes, sir. Yes, ओके जी। sir. उसामा बिन अजहर। Yes, sir. ओके, महमूदुल हसन नहीं है, मोहम्मद Yes, अब्बास sir. नहीं है। महमूदुल हसन है। यस सर। अच्छा, फहद अली है। अच्छा, यस सर। ठीक है। या माइक ऑफ कर ले। लेट्स टेक अगेन। थैंक यू जी, थैंक यू। So you know that this is what? This is y double dash plus the general second order differential equation is in the form of px y dash. This is plus q of x into y. This is equal to 0. This is general second. If this is g of x, so this is called second order non-homogeneous differential equation. You know about this. ठीक है जी। दिस इज नॉन होमोजीनियस सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। दिस इज नॉन होमोजीनियस सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है जी। जी सर, ठीक हुआ। अच्छा जी, अब इसका सॉल्यूशन कैसे होगा? द सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजीनियस इक्वेशन इज द सॉल्यूशन is of the form
solution of this equation 1 will be of the form y is equal to, ये नोट करें, ये मैंने पहले भी लिखा था, this is yc plus yp. हमेशा नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन दो सॉल्यूशंस का एडिशन होगा. वन इज कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन yc and another part is the particular solution. मैंने आपसे पहले भी कहा था, if you remember, if you solve this differential equation that is d square y by dx square, हमने ये एक छोटा सा एग्जांपल भी किया था. if this is equal to 2, so if you solve it, you will get, if you integrate it twice, you will get x square plus c1x plus c2. If you remember that, this is plus c2. So this part is known as yc, that is part complementary solution, and this part which doesn't involve the constant, arbitrary constant, this is called yp. So always, now this is homogeneous differential equation. So always the solution of homogeneous differential equation is equal to y is equal to yc, this is yp plus yc या yc plus yp. ठीक है जी, ये याद है ना सर? ये नॉन होमोजीनियस है कि होमोजीनियस है सर? ये नॉन होमोजीनियस है ड्यू टू 2. ठीक हो सर. अच्छा जी, अब क्वेश्चन ये है कि yc कैसे फाइंड करें, हाउ टू फाइंड yc. So if you make this non-homogeneous equation as homogeneous, अगर आप उस टर्म को ही जीरो कर ले जिसकी वजह से वो नॉन होमोजीनियस हैं, अब आप सॉल्व करें, you will get c1 plus c2x या c1x plus c2, this one. So this solution is called complementary solution, that part. So ये फाइंड करना yc किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का फाइंड करना मुश्किल नहीं है. क्यों मुश्किल नहीं है? क्योंकि आप उस नॉन होमोजीनियस टर्म को जीरो ले लेंगे और आप उसको सॉल्व कर लेंगे. सो यू विल गेट yc. ये क्लियर हुआ? यस सर. जी. अच्छा जी, नो द क्वेश्चन इज, इस क्लास में हमारा yc हम पहले भी फाइंड कर चुके हैं. हमने बहुत सारे होमोजीनियस इक्वेशंस पढ़े जिसमें हमने उसका सॉल्यूशन फाइंड किया था. तो होमोजीनियस इक्वेशन के सॉल्यूशन को हम yc कहते हैं. लेकिन अब इस टर्म का जो 2 है, इसका कंट्रीब्यूशन सॉल्यूशन में होगा, वो ये है एक्स स्क्वायर. इस टर्म को कैसे फाइंड करें? या इस टर्म gx, ये कोई भी टर्म हो सकता है, ये कांस्टेंट भी हो सकता है, ये फंक्शन भी हो सकता है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी हो सकता है, ये पॉलिनोमियल भी हो सकता है, ये लॉग फंक्शन भी हो सकता है. सो हाउ टू फाइंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस टर्म ऑन दिस इक्वेशन ऑन सॉल्यूशन? So that is yp. The contribution of this non-homogeneous term on the total solution is yp. So how to find yp? This is our target in this class. समझ आ रहे हैं जी? जी सर. अच्छा जी, तो इस क्लास में हमारा टारगेट ये है कि yp फाइंड करे. yc जो है होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व करे, मतलब जो नॉन होमोजीनियस इक्वेशन गिवन है उसको पहले होमोजीनियस बनाए, मतलब उस टर्म को जीरो करे जिसकी वजह से वो नॉन होमोजीनियस है. यू सॉल्व इट, यू विल गेट द सॉल्यूशन एंड दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड yc, complementary solution. Now how to find the impact of solution when there is gx, when there is source term, when there is external force? So that part of solution is called particular solution, that is yp. How to find the yp value? So for this finding yp, we will study the second topic, that is the undetermined coefficient method. This method is actually for finding yp. ठीक है जी. So
यहाँ पे ये कह रहे हैं assume you are required to solve the non-homogeneous differential equation with constant coefficients. This, due to this gx, now this equation is non-homogeneous. So what will be the general solution of non-homogeneous differential equation? It will be yc plus yp, where yc is the complementary solution, या complementary function, and yp is the particular solution, that is particular integral or particular solution, a particular function. So yc is a solution of associated homogeneous differential equation studied in the previous lecture. हम पढ़ चुके हैं कि yc को कैसे फाइंड करेंगे. yc is actually the solution of homogeneous differential equation. So here we will learn how to find yp, to find the general solution yc plus yp. So for this, for finding yp, actually we are studying the what? The undetermined coefficient method. कुछ समझ में आ रहा है जी? जी हेलो, यस सर. अच्छा जी, अब देखें. यस सर, आ रहा है. जी जी जी, थैंक यू. अब देखें, इस मेथड में मैं राइट हैंड साइड वैल्यू को gx का नाम दे रहा हूं, ये जहन में रख ले. gx is the right hand side value due to which this differential equation is non-homogeneous. So gx, मैं gx यूज कर रहा हूं, राइट हैंड साइड वाली वैल्यू को मैं gx का नाम दे रहा हूं. सो अकॉर्डिंग टू ये जो मेथड है, इसको हम गेस मेथड भी कह सकते हैं, इसको हम इंस्पेक्शन मेथड भी कहते हैं. इसमें हम राइट हैंड साइड वैल्यू को, जो gx आपकी राइट साइड में वैल्यू है, राइट साइड वैल्यू को देखते हैं. उसके मुताबिक हम, अगर gx आपका 2 हुआ, अगर gx आपका 3 हुआ, अगर gx आपका 4 हुआ, या gx आपका 2.5 हुआ, या एनी अदर कांस्टेंट वैल्यू हुई, इसके अलावा एनी अदर कांस्टेंट वैल्यू हुई, एनी रियल नंबर हुआ, सो yp को आप कैसे सेलेक्ट करेंगे? yp इस मेथड में हम खुद से सेलेक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड साइड. सो अगर राइट हैंड साइड में कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हुई, सो yp को आप एक जनरल कांस्टेंट दे दे, दिस इज योर yp. अगर राइट हैंड साइड में कोई भी पॉलिनोमियल हुआ, सपोज दिस इज x plus 1, this is x minus 1, maybe this is 2x plus 1. So all these are what? All these are linear polynomials. So if this is the situation, so what will be your yp selection? Your yp selection will be, this is a guess method, आप guess करेंगे yp को. This is general yp when the right hand side involve the linear polynomial. So yp selection will be ax plus b. So first thing is, you select yp according to the right hand side. If the right hand side is of this way, that is x square plus 1, suppose this is plus 1. If this is x square minus 1, if this is only x square, if this is x square plus 2x plus 1, so all these are quadratic polynomials. 2x plus 1, so all these are linear polynomials, sorry, quadratic polynomials. So if this is the situation at the right hand side, so your yp selection will be, yp will be equal to ax square plus bx plus c. This will be your situation. यहां तक समझ आ रहे हैं जी? जी सर.
जी सर, लेकिन ओके जी सर एक सवाल है, पूछूं? जी जी। सर अगर x पावर 2 की जगह x पावर अंडर रूट 2 हो या x पावर अंडर रूट 3 वगैरह हो तो हाँ फिर क्या होगा वो सर? हम इसका नहीं कोई कर सकते वो, क्योंकि वो आपकी x पावर 1/2 अगर हैं, सो अगर अलजेब्राइक की पावर जो है वो डिजिट्स में है, वो हम कर सकते हैं। जी सर, ठीक है। इस मेथड से हर हर राइट हैंड साइड वाला, मैं आगे ये बताऊंगा। अगर जी एक्स में आपके पास ई एक्स हुआ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, 2e पावर x हुआ, ठीक है जी, या 3e पावर x हुआ, so how to write the yp selection? So your yp selection will be equal to ae power x. So write a constant and the same exponential function ae power x. अब अगर ये e पावर माइनस एक्स हुआ, ये e पावर माइनस एक्स हुआ, ये e पावर माइनस एक्स हुआ, सो राइट ए e पावर माइनस एक्स। अगर ये e पावर 2x हैं तो राइट a e पावर 2x। so this is the selection according to the right hand side. Now the third one is, if at the right hand side there is sin x, that is trigonometric function sin x or cos x, or the combination of these two, sin x plus cos x या sin x minus cos x, sin x plus cos x. So your selection for yp, this is a guess method, inspection method. This is not a proper procedure behind this method. So you will write, this is a sin x plus b cos x. So if you have sin x only, so your selection will be same. If you have cos x only, so your selection will be same. If you have a combination of these two, your selection will be same. यहाँ तक क्लियर है जी? सर ये एक्सपोनेंशियल दोबारा थोड़ा सा करें सर। अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो भी आ जाए राइट हैंड साइड में, आपका जो भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो yp आप सेलेक्ट करें द सेम एक्सपोनेंशियल फंक्शन विद कोएफिशिएंट कांस्टेंट कोएफिशिएंट a। अच्छा जी, अगर राइट हैंड साइड में आपका कोई भी एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स एग्जिस्ट करे, या कोई भी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, सपोज दिस इज अगेन ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ई पावर एक्स एग्जिस्ट करे, ठीक है जी, या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एग्जिस्ट करे, सो व्हाट विल बी योर सिलेक्शन फॉर वाईपी? वाईपी का सिलेक्शन कैसे होगा जी? एक्स स्क्वायर के लिए आप क्या लेंगे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक्स स्क्वायर के लिए आपका सिलेक्शन ये होता है, और ई एक्स के लिए क्या होगा? एस ई एक्स के लिए इसको ऐसे ही लिख ले। क्यों? क्योंकि अगर आप डी ई एक्स लिखेंगे भी, तो वो डी जब अंदर मल्टीप्लाई होगा ए बी सी के साथ, तो वो कांस्टेंट अगेन एक और कांस्टेंट दे देगा। सो देयर इज नो नीड, एफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज एन प्रोडक्ट विद एनी अदर फंक्शन। अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन किसी और फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई में है, तो उस दूसरे फंक्शन की yp की वैल्यू लिख ले और एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऐसे ही लिख ले। समझ आ रहे हैं जी? सर ये दोबारा कराए ये जी। अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपका, अगर आपके पास x e पावर 2x आ जाए, ठीक है, राइट हैंड साइड में अगर x e पावर 2x आ जाए, सो x के लिए आप yp कैसे लिखते हैं, ये मुझे आप बता दें। x के लिए ax प्लस b लिखेंगे ना। x इज ए लीनियर पॉलिनोमियल। ये देखिए, x के लिए हमने क्या लिखा था, ये वाला ax प्लस b लिखा था ना, और साथ में एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो भी है वो लिख ले। सो दिस इज yp सिलेक्शन if the exponential function is in product with polynomial। क्लियर हुआ जी? सर ये अगर हमारे पास सिर्फ साइन आ जाए
ट्राइग्नोमेट्रिक का, तो क्या बनेगा? किसके साथ साइन आ जाए? सर अगर ट्राइग्नोमेट्रिक जी एक्स हमारा सिर्फ साइन एक्स हो, तो वो हम सेलेक्ट करेंगे ए साइन एक्स प्लस बी काज एक्स। सर ये cos कहाँ से आ गया सर? a sin x प्लस b sin x नहीं आएगा सर? साइन के लिए ए साइन एक्स प्लस बी काज एक्स, कास के लिए भी ए साइन एक्स बी काज एक्स, और साइन और प्लस कास के लिए भी यही होगा। और अगर साइन माइनस एक्स cos एक्स हो सर? अगर माइनस हो प्लस साइन एक्स माइनस काज एक्स हो फिर भी यही होगा। ओके सर, थैंक यू। अच्छा जी, अब देखिए हमने क्या पढ़ा। हमने ये पढ़ा कि अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन हो, हाउ टू सेलेक्ट वाई पी। अगर अगर कोई भी पॉलिनोमियल हो, हाउ टू सेलेक्ट वाई पी। अगर कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, हाउ टू सेलेक्ट वाई पी। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक में सिर्फ साइन काज हो या उनका कॉम्बिनेशन हो सिर्फ साइन काज, उसका कॉम्बिनेशन हो, हाउ टू सेलेक्ट वाई पी। ये चार चीजें हमने पढ़ी। फिर पांचवा पॉइंट ये है कि अगर इन चारों में से कोई प्रोडक्ट में आ जाए, अगर एक्स स्क्वायर और प्लस ई एक्स आ जाए, सपोज ये प्लस प्लस में अब आ गए, सो हाउ टू सेलेक्ट वाई पी। कौन बता सकता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ब्रैकेट e पावर x। नहीं, ब्रैकेट नहीं होगा वहां पे, चूंकि वहां पे एक्सपोनेंशियल प्रोडक्ट में था, अब तो एडिशन में है। प्लस आएगा सर फिर, प्लस e आएगा, पावर x। प्लस प्लस डी ई पावर एक्स। ठीक। ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस ए एक्स प्लस प्लस ए ई पावर एक्स। प्लस डी ई पावर एक्स। लेकिन अगर ये प्रोडक्ट में हुआ तो फिर डी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो डी मल्टीप्लाई होकर अगेन कांस्टेंट बन जाएगा। सो इफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज इन प्रोडक्ट, सो देयर इज नो नीड टू राइट डी विद दैट या एनी कांस्टेंट विद दैट। अगर वो एडिशन में है तो फिर आप लिखेंगे। सो ये स्लाइड को थोड़ा सा देख लें। ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास कोई नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है और उसके राइट हैंड साइड पे कोई भी कांस्टेंट फंक्शन है, एक कांस्टेंट फंक्शन, तो इसके लिए हमने पढ़ लिया कि कांस्टेंट फंक्शन अगर हुआ तो वाईपी कैसे सेलेक्ट करेंगे। फिर हमने ये पढ़ा कि पॉलिनोमियल अगर हुआ तो हाउ टू सेलेक्ट वाईपी। फिर हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए पढ़ा। फिर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक में साइन और कॉस के लिए पढ़ा। और फिर हमने उसके सम या उसके प्रोडक्ट के लिए पढ़ा। ये 5 चीजें हमने पढ़ ली। ये क्लियर है ना? जी सर क्लियर है जी सर, सर। अभी एक 15 मिनट की ब्रेक दे दें। हाँ जी। अदरवाइज अगर log x हुआ, ये हमने नहीं पढ़ा हाउ टू सेलेक्ट वाई पी व्हेन जी एक्स इज log x। हमने ये भी नहीं पढ़ा कि जी एक्स इज 1 ओवर एक्स, या जी एक्स इज सीकंड एक्स, टेंजेंट एक्स, कोटेंजेंट एक्स, या जी एक्स साइन इनवर्स एक्स, काज इनवर्स एक्स, सीकंड इनवर्स एक्स। इसके लिए हमने वाई पी नहीं पढ़ा। तो अगर राइट हैंड साइड में इस टाइप का कोई फंक्शन एग्जिस्ट करे, तो हम वाई पी सिलेक्शन में अभी तक कामयाब नहीं है। ये क्लियर हुआ? हमने सिर्फ पॉलिनोमियल के लिए वाई पी सिलेक्शन पढ़ लिया, कांस्टेंट के लिए पढ़ लिया, एक्सपोनेंशियल के लिए पढ़ लिया, ट्रिग्नोमेट्रिक में सिर्फ साइन और कास के लिए पढ़ा, और फिर इन चारों के एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए हमने पढ़ा। बाकी अगर राइट साइड पे फंक्शन है तो फिर ये मेथड फेल हो जाएगा टू सॉल्व दिस, टू फाइंड द पार्टिकुलर सॉल्यूशन फॉर दैट नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर हम नहीं कर सकेंगे। ये क्लियर हुआ ना जी? सर 15 मिनट्स की ब्रेक दे दें सर। चले ले लें, ले लें। सो 15 मिनट मीन्स के 9:36 पे आएंगे वापस। ठीक है जी, ठीक है जी। ओके सर। जी सर सही है। ओके जी, थैंक यू।
जी हेलो. Yes, sir. Okay जी, okay, thank you. So before break we have studied that how to select yp according to the right hand side values. So now you can select the yp if at the right hand side there is any constant value. You can select yp if there is any polynomial at the right hand side. You can select also yp when there is any exponential function, and you can also select yp if there is sine or cos, and also you can select if there is any product or sum of these functions. So now the another question is, first step is for this method is, that is the undetermined coefficient. The first step is to select yp according to the right hand side. So this is first step in this method. First select yp according to the right hand side function gx, and then suppose this is y double dash plus 3y dash plus 2y. This is equal to any function, suppose x square plus x plus 1. This is x square plus x plus 1. So we will say that this equation is non-homogeneous. So equation 1 is non-homogeneous. So if equation 1 is non-homogeneous, so the first step is, so its solution will be y will be equal to yc plus yp if this is non-homogeneous. So first step is to find yc. So yc is simple. For yc, we will make this equation as homogeneous. That is y double dash plus 3y dash plus 2y. This will be equal to 0. So we make first this equation as homogeneous and solve this. So for solution is, this equation is homogeneous with constant coefficient. So you will write the characteristic equation. So what will be the characteristic equation? That will be m square plus 3m plus 2 equal to 0. This will be the characteristic equation. So what is the solution of this algebraic equation? That is m is equal to -1 and m is equal to -2. So what will be your yc? चलो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ. So what is your yc? yc will be equal to c1 e power mx means minus x, because m is 1 minus 1, and another solution is c2 e power minus 2x. So this is yc आप find कर सकते हैं. This is simple. Now the question is how to find yp. For yp using undetermined coefficient method, UCM, undetermined coefficient method. So according to this method, accordingly, what we did, we select yp by looking to the right hand side. So what is yp in this case? Ax square plus bx
प्लस सी, दिस इज योर yp, ये होगा ना, बिकॉज द राइट हैंड साइड इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर यहां पे सिर्फ एक्स स्क्वायर भी हो, योर सिलेक्शन विल बी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स भी हो, योर सिलेक्शन विल बी सेम। अगर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 3 एनी वैल्यू है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, दिस इज योर सिलेक्शन फॉर yp। समझ आ रहे हैं जी? यस सर। ओके जी, दिस इज फर्स्ट स्टेप। According to undetermined coefficient method, first step is select yp according to the right hand side terms. So this is yp. Now second step is, which is most important, this you check all the terms of yp and yc. yp के सारे टर्म्स को yc में चेक करें कि कहीं पे yc का कोई टर्म, yp का कोई टर्म yc में तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा। सो सेकंड स्टेप इज चेक ऑल टर्म्स ऑफ yp एंड yc। अगर yp का कोई भी टर्म, नोट करें इस पॉइंट को, yp जो आपने राइट हैंड साइड को देख के सेलेक्ट किया, दिस इज फर्स्ट स्टेप for yp. Second step is you check all the terms of yp and yc. अगर yp का कोई भी टर्म yc में एग्जिस्ट करे, अगर yp का कोई भी टर्म yc में एग्जिस्ट करे, तो आप उस टर्म के, yp के उस टर्म के साथ x मल्टीप्लाई करें जो टर्म yc में एग्जिस्ट कर रहा है। बात समझ में आई? सर इस जुमले को दोबारा रिपीट किया, अगर yp का कोई टर्म yc में आ जाए तो फिर? अगर yp का कोई भी टर्म, अब इस केस में yp में 3 टर्म्स हैं, yp का कोई भी टर्म yc में अगर एग्जिस्ट करे तो उस टर्म के साथ x मल्टीप्लाई करे। मैंने आपसे पहले कहा ये मेथड जो है प्रोसीजर से डेवलप नहीं है, जिस तरह मैथमेटिक्स में हम फार्मूले डेवलप करते हैं ना, आगे एक और मेथड आएगा इसी yp को फाइंड करने के लिए, वो एक प्रोसीजर से होगा। अब ये प्रोसीजर नहीं है, दिस इज इंस्पेक्शन मेथड, दिस इज गेस मेथड। सो yp पहले आप सेलेक्ट करें अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड साइड, दिस इज फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप इज yp के सारे टर्म्स को चेक करें yc में। अगर कोई भी टर्म yc में एग्जिस्ट करे तो उस टर्म के साथ x मल्टीप्लाई करे। एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है? अगर यहां पे सपोज, अगर यहां पे कोई प्लस c3 एग्जिस्ट करे, c3, नो कांस्टेंट टर्म का बिहेवियर सेम होता है दिस वन। सो हम कहेंगे कि ये टर्म इस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, अनदर कांस्टेंट के फॉर्म में। ये समझ आ रहे हैं जी? जी सर। अच्छा जी, अगर यहां पे कोई c4x एग्जिस्ट करे तो हम कहेंगे कि ये bx जो है इन द फॉर्म ऑफ c4x एग्जिस्ट कर रहे हैं। मतलब अगर कांस्टेंट डिफरेंट भी हो कोएफिशिएंट, वो फंक्शन सेम होना चाहिए जिसके साथ वो कोएफिशिएंट है, तब हम कहेंगे कि ये फंक्शन उसमें एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम अब चूंकि c एग्जिस्ट कर रहे हैं c3 के फॉर्म में और bx एग्जिस्ट कर रहे हैं c4x के फॉर्म में, तो ये दो टर्म्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इन दो टर्म्स के साथ हम x मल्टीप्लाई करेंगे और your new yp will be ax square plus bx square, क्योंकि bx एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उसके साथ आपने x मल्टीप्लाई करना है और c भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, सो दिस विल बिकम cx। ठीक है जी। अब अगेन चेक करें, फिर सारे टर्म्स को चेक करें। सो अगेन मेरे ख्याल में ये cx फिर भी एग्जिस्ट कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ c4x। सो अगेन इस टर्म के साथ फिर x मल्टीप्लाई करें, इट विल बिकम cx स्क्वायर। अब फिर सारे टर्म्स को चेक करें, अब कोई भी टर्म yc का एग्जिस्ट नहीं कर रहा, सो दिस इज योर अपडेटेड yp, दिस इज योर
अपडेटेड yp। सो फर्स्ट स्टेप आपका ये होगा कि yp को अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड साइड चेक करें, फिर उस yp को अगर अपडेट हो सकता है तो अपडेट करे। समझ आ रहे हैं ना? जी सर आ रही है। अच्छा जी, सर ये वैसी कैसे बना सर? ये वैसी वाईपी तो राइट साइड से बनाएंगे, वैसी कैसे बना सर? yc तो आप जिस तरह पहले सॉल्व करते थे ना होमोजीनियस इक्वेशन को। अच्छा अच्छा ठीक है सर। हाँ ठीक है जी। अच्छा जी, अब yp आप पहला स्टेप ये है कि yp सेलेक्ट करें। नेक्स्ट स्टेप इज अगर अपडेट हो सकता है तो अपडेट करें। अपडेट होने का मतलब मेरा ये है कि अगर yp का कोई भी टर्म yc में एग्जिस्ट कर रहा है तो आप उस टर्म के साथ x मल्टीप्लाई करें, x उसके साथ मल्टीप्लाई करें। अब इस केस में चूंकि ये तो मैं रफली कर रहा था, अब इस क्वेश्चन में yp का कोई भी टर्म yc में एग्जिस्ट नहीं कर रहा ना? जी सर नहीं कर रहा। हाँ, कांस्टेंट टर्म नहीं है, लीनियर टर्म नहीं है, क्वाड्रेटिक टर्म वहां पे नहीं है। सो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि एज देयर इज नो टर्म ऑफ yp एग्जिस्ट इन yc, एज देयर इज नो टर्म, there is no term of yp, there is no term of yp exist in yc, so what is your, so yp will be same, there will be no change in your selected yp, so yp will be ax square plus bx plus c. This will be your updated yp. Updated and initial yp will be same in this case. This is your yp. अब this is equation 3. Now how to find these constant, that is a, b and c. अगर ये find हो जाए then we will put these values in this equation and you will get yp, और फिर उस yp को yc के साथ ऐड कर ले, you will get the general solution. So this method is called undetermined coefficient method because in this these coefficients are unknown. We have to find these unknowns. So therefore this method is called undetermined coefficient. ये coefficient हमने find करने हैं. So on the base of this is called undetermined coefficient method. समझ आ रहे हैं ना जी? जी सर आ रहा है। अच्छा जी, अब इस इन वैल्यूज को ए बी सी को फाइंड के लिए थर्ड स्टेप है। फर्स्ट स्टेप ये है कि आप yp को अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड साइड सेलेक्ट करें। सेकंड स्टेप इज उस yp का कोई भी टर्म अगर yc में एग्जिस्ट कर रहे हैं उसके साथ x मल्टीप्लाई करें, अगर फिर भी कर रहे हैं एक और x मल्टीप्लाई करें, अगर फिर भी कर रहे हैं एक और x मल्टीप्लाई करें, वहां तक आपने मल्टीप्लाई करना है जहां तक yp का कोई भी टर्म yc में एग्जिस्ट ना करे। नाउ यू विल ऑब्टेन एन अपडेटेड yp। उस अपडेटेड yp में कोएफिशिएंट्स होंगे जो कि अननोन होंगे। अब थर्ड स्टेप ये है कि उसको फाइंड करें। अच्छा, फाइंड कैसे करेंगे? उस yp को जो आपका अपडेटेड yp है उसको डिफरेंशिएट करें। This is 2ax in this case and this is plus b. What is y double dash? Your y double dash is what? This is 2a. This is simple thing. So you put these values in equation 1. इन values को equation 1 में put करें। So equation 1 क्या देगा जी? equation 1 क्या दे देगा? equation 1 क्या था? y double dash. So the value of y double dash is 2a. So 1 implies, if you put the values in equation 1 implies 2a plus 3y dash था,
3y dash, y dash means 2ax plus b. So 3y dash means 6ax plus 3b. And plus 2y means ax square plus bx plus c. This is your y value. So plus 2y means 2ax square plus 2bx plus 2c. This is equal to what? राइट हैंड साइड में वैल्यू क्या थी? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1. मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ ये वैल्यूज पुट किए. अब अगर इक्वेशन आपके पास एक हो और अननोन की तादाद एक से ज्यादा हो, सो यू ऑलवेज मेड कंपैरिजन. सो कंपैरिजन कर ले. कंपैरिजन किन चीजों का करेंगे ये जहन में रख ले. आप वाई पी को देख ले. वाई पी के कोएफिशिएंट ए बी के साथ क्या है? एक के साथ एक्स स्क्वायर है, दूसरे के साथ एक्स है, तीसरे के साथ एक्स पावर 0 है. सो यू कंपेयर द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स पावर 1 एंड एक्स पावर 0. ये समझ में आ रहा है जी? जी सर. जी सर. अच्छा जी, कंपैरिजन किन चीजों का करेंगे? आप वाई पी को देखेंगे. अगर यहाँ पे वाई पी ए एक्स स्क्वायर हो प्लस बी एक्स हो और प्लस सी एक्स हो प्लस सी हो प्लस बी एक्स एंड प्लस सी. सो आप कंपैरिजन करेंगे एक्स स्क्वायर का, एक्स का और सी का. तो जब तीन कंपैरिजन कर लेंगे यू विल गेट ए बी एंड सी. लेकिन अगर यहाँ पे प्लस डी ई एक्स भी हो तो फिर एक चौथा कंपैरिजन भी करेंगे. किस चीज का? 0dx 0d सर. नहीं, डी जीरो डी नहीं, ओनली पॉलिनोमियल का कोएफिशिएंट, मतलब ई एक्स का कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे. ठीक है जी? ठीक हुआ सर. हाँ जी. दिस इज बी एक्स प्लस सी. अच्छा जी, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट अगर कंपेयर करेंगे तो लेफ्ट साइड से आपको 2a मिल जाएगा, इक्वल टू राइट साइड से 1 मिल जाएगा. एक्स पावर 1 वाले अगर कंपेयर करेंगे तो 6a मिल जाएगा और प्लस 2b मिल जाएगा और राइट साइड से 1 मिल जाएगा. और अगर कांस्टेंट कंपेयर करेंगे सो लेफ्ट साइड से 2a प्लस 3b प्लस 2c इक्वल टू 1 मिल जाएगा. So if you solve this system of equation, you will get the values of a, b, c, and you put it in the updated yp, so you will get yp, and you add it with yc, so you will get the general solution. ये clear हुआ जी? Yes sir, clear. Okay जी. So जी अब देखें, अब स्टेप्स क्या बने ये देखें. अब ये स्टेप हैं. द मेथड इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स. पहले ये देखें कि जी एक्स को आप देख ले, जी एक्स के फॉर्म को फाइंड करें कि कौन सा फॉर्म है. दिस इज फर्स्ट स्टेप. फिर उसके मुताबिक वाई पी को सेलेक्ट करें. नेक्स्ट स्टेप इज, एक स्टेप इन्होंने छोड़ दिया है. नेक्स्ट स्टेप इज yp को अपडेट करे. थर्ड स्टेप इज yp को डिफरेंशिएट करे और उस गिवन इक्वेशन में पुट करे और कोएफिशिएंट a b c कंपैरिजन से फाइंड करे. जब फाइंड हो जाए उसको yp में पुट करे. सो दीज आर ऑल स्टेप्स. ये क्लियर है ना? ये मैंने एक्सप्लेन कर लिया ऑलरेडी. ठीक है जी? यस सर. ठीक हुआ सर. अच्छा जी, अब रेस्ट्रिक्शन ऑन जी एक्स क्या है? रेस्ट्रिक्शन ये है कि अगर वाई पी कोई टेंजेंट एक्स बना, सो उसके लिए अगर जी एक्स कोई टेंजेंट, जी एक्स में रेस्ट्रिक्शन है. जी एक्स अगर कोई ऐसा फंक्शन हमें मिला
ये देखिए, the derivatives of sums and products of polynomial, exponential, etc. are again sums and product, they are kinds of functions equal to endpoint function. There are some restriction on gx. अच्छा जी, क्या रेस्ट्रिक्शन है कि gx टेंजेंट x नहीं होना चाहिए, log x नहीं होना चाहिए, sin इनवर्स x नहीं होना चाहिए. सो दीज आर रेस्ट्रिक्शन. अब ये क्वेश्चन है, एहतियात करें. ये एहतियात आपने करनी है कि yp का कोई भी टर्म yc में डुप्लीकेट ना हो. ये जैसे मैंने आपसे पहले कहा, yp का कोई भी टर्म yc में डुप्लीकेट ना हो, रिपीट ना करे, उस टर्म का कोई टर्म एग्जिस्ट ना करे yc में. ये क्लियर हुआ? जी सर. अच्छा जी, अब ये आपको वो टेबल बता रहे हैं कि कैसे आप राइट साइड को अगर 1 हुआ तो आप yp को a दे दे, अगर 5x + 7 हुआ तो ax + b दे दे, अगर 3x - 2 हुआ एक. तो ये ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ, टेबल आपके पास मौजूद है. अब ये कह रहे हैं कि अगर yp का कोई भी टर्म डुप्लीकेट हो जाए yc में, तो उसको x पावर n के साथ मल्टीप्लाई करें. x पावर n मीन्स मे बी n is 0, मे बी n is 1, maybe n is 2, maybe n is 3. So ये कह रहे हैं कि अगर yp का एक टर्म एक दफा रिपीट हो जाए तो उसको x के साथ करे, अगर 2 दफा रिपीट हो जाए तो x स्क्वायर के साथ करे, अगर 3 दफा रिपीट हो जाए तो x क्यूब के साथ करे. सो वही स्टोरी है जो मैं आगे पहले बता चुका हूं. ठीक है जी. नाउ दिस इज एग्जांपल 1, y डबल डैश प्लस 4y. सो दिस इज this one. This is suppose x y डबल डैश प्लस 4y, अगर ये एग्जांपल ऐसे हुआ, प्लस 4y इक्वल टू x स्क्वायर. This is equation 1. So equation 1 is non-homogeneous again. So its solution will be y is equal to yc plus yp. How to find yc? For yc we will make this equation as homogeneous. That is, हम ये करेंगे कि इसको हम y डबल डैश प्लस 4y को इक्वल टू 0 ले लेंगे. यहां तक समझ आ रहा है जी? जी सर, आ रही है. अच्छा जी, अब देखें आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगा? m स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0. सो m की वैल्यूज कौन बता सकता है मुझे? m की वैल्यूज मैं इसको प्लस माइनस 2 आयोटा लिख सकता हूं. +2. अच्छा, इसको मैं 0 प्लस माइनस 2 आयोटा भी लिख सकता हूं. लिख सकते हैं ना? अब मुझे yc कौन बताएगा? कौन बता सकता है yc? ax square. नहीं, yc की बात कर रहा हूँ. x power n of 0. नहीं Oh है. yes. e C. power 0x, e power alpha x, alpha is 0, तो e power 0x, e power 0x means 1, so उसको लिखने की जरूरत Into नहीं है. c1 cos alpha cos beta cos of beta x plus c2 sin of beta x. Yes. So this is your yc, already ये पढ़ चुके हैं. Now for yp we are using undetermined coefficient method. So according to this, so again same selection will be for yp, क्योंकि पॉलिनोमियल हैं और पॉलिनोमियल के लिए हम ये करते हैं. ये तो क्लियर हुआ ना? यस सर. अब सेलेक्ट तो आपने कर लिया, yp को आपने राइट हैंड साइड को देख के सेलेक्ट तो कर लिया. अब yp को अपडेट करना है अगर हो रहे हैं. सो yp का कोई टर्म yc में एग्जिस्ट कर रहे हैं? No sir. अच्छा, अगर नहीं कर रहा तो फिर एज देयर इज नो टर्म ऑफ yp एग्जिस्ट इन yc, सो दिस इज योर अपडेटेड yp. सो अब क्या करें? a b c को फाइंड करने के लिए क्या करें? इसको डिफरेंशिएट करेंगे ना? Yes sir. अच्छा, इसको इक्वेशन 1 में फिर पुट करेंगे.
सो इक्वेशन 1 में पुट करने के बाद फिर कंपैरिजन करेंगे एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट का, एक्स का और कांस्टेंट का. सो यू विल गेट ए बी सी एंड यू विल गेट इट, यू विल पुट इट इन इक्वेशन 3. यू विल गेट वाई पी एंड यू विल ऐड दिस विद दिस इक्वेशन, दैट इज इक्वेशन, इस इक्वेशन के साथ ऐड करें. सो यू विल गेट वाई सी एंड यू विल गेट द जनरल सॉल्यूशन फ्रॉम इक्वेशन 2. तो ये क्लियर हुआ मेरे ख्याल में, क्लियर है ना? सो ऑलरेडी इसमें सॉल्व हो चुका है. दिस इज योर वाई पी, दिस इज योर वाई डैश पी, दिस इज वाई डबल डैश पी. If you put it in the given equation, so given equation is y double dash plus 4y equal to what? 8x square. No, 8x square. Gee, 8x square है. So again, if you put, you will get a is 2, b is 0, and c is -1. So if you put these values in yp, you will get 2x square minus 1. So you add yc plus yp, you will get the general solution. Clear है जी? Yes, sir. Okay. Now this is another example. So what is the for finding yc, you will make it homogeneous, that is y double dash plus y dash equal to 0. So what is its characteristic equation? M square plus m equal to 0. So the values of m are 0 and -1. So how to write this yc? c1 e power 0x plus c2 e power -x. यहाँ तक क्लियर है yc? जी यस सर. Yes, sir. अच्छा जी. अब yp कैसे होगा, चलिए बता दें मुझे. अगर sin x है तो क्या होगा हमारा yp? a sin x plus b A cos sin x plus प्लस B, cos B Yes. cos x. या a cos x plus b sin x, एक ही बात है. ठीक है जी. अच्छा जी, अब देखिए yp का कोई टर्म yc में एग्जिस्ट कर रहे हैं. yc क्या था? yc तो c1 plus c2 e power minus x थी. ठीक है जी. yc क्या है? c1 plus c2 e power minus x. सो yp का कोई टर्म yc में एग्जिस्ट कर रहा है, ये मुझे आप बता दें. नहीं कर रहा है सर. नहीं कर रहा. सो आप उसको डिफरेंशिएट करें, y डैश p y डबल डैश p गिवन इक्वेशन में पुट करें. अब आप कंपैरिजन किन किन चीजों का करेंगे? yp के कोएफिशिएंट के साथ कौन कौन से फंक्शंस हैं? cos और sin है ना. Yes, sir. तो आप cos x और sin x के कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे. तो लेफ्ट साइड पे cos x का कोएफिशिएंट है -a प्लस b, राइट साइड पे नहीं है, तो -a प्लस b 0 बन जाएगा. sin x का कोएफिशिएंट लेफ्ट साइड पे -b माइनस a है और राइट साइड पे 1 है. So you will get the values of a and b and you put it in yp, so this will become yp. So मेरे ख्याल में सिंपल है. ठीक है जी. अब एग्जाम्पल 3 में आप मुझे बता दें कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगा. होमोजेनियस अगर सॉल्व करेंगे तो इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगा? m square minus 5m plus 4. Yes. So m square minus 5m plus 4 equal to 0. This implies m is 1 and 4. तो yc क्या बना? c1 e power x plus c2 e power 4x. यहां तक समझ आ रहा है? जी सर. अच्छा जी. अगर yc आपका ये बना तो y राइट हैंड साइड में फंक्शन क्या है? 8ex. yp का सिलेक्शन आपका क्या होना चाहिए? a e power x. यस, a e power x. लेकिन अगर a e power x आप देख ले तो ये तो yc में मौजूद है c1 e power x के फॉर्म में. a e power x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. हाँ, तो a e power x के साथ क्या करेंगे?
x मल्टीप्लाई करे, दिस इज योर वाई पी। ठीक हुआ जी? जी सर ठीक अच्छा हुआ। जी, अब इस वाई पी को डिफरेंशिएट करे 2 दफा और गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करे, you will get the value of a which is minus 8/3 and you put it in yp, you will get yp and you add it with yc, so you will get the general solution. This is another example. आपका आपका होमोजेनियस इक्वेशन क्या होगा? ये होगा। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या बनेगा? m square minus 2m plus 1, m square minus 2m plus 1, m के 2 वैल्यूज आ जाएंगे, कौन कौन से? 1 and 1। सो yc क्या बना? c1 plus c2x multiplied by whole e power x। यहां तक क्लियर है जी? Yes, sir. अच्छा जी, अब yp आपका क्या होगा? राइट हैंड साइड में क्या है? ex है, तो yp तो आपका aex होना चाहिए ना? जी सर। लेकिन ये aex तो yc में c1 e पावर x फॉर्म में मौजूद हैं, तो आपका yp क्या बना? ax ex। लेकिन ये yp का अगेन देख ले, ax ex भी c2x e पावर x फॉर्म में मौजूद हैं, तो नया yp आपका क्या होना चाहिए? ax square e power ax x. square power x। Yes, so this is your new yp, ax square e पावर x। अब इस yp को 2 दफा डिफरेंशिएट करें और फिर गिवन इक्वेशन में पुट करें, you will get the value of a and the value of a is 1/2। ये क्लियर हुआ जी? जी सर क्लियर है। सर वाईसी को दोबारा प्रीवियस स्टार्ट थोड़ा दिखाएं सर। वाईसी वाला yc तो सिंपल है। yc फाइंड करने के लिए आप इस इक्वेशन को इक्वल टू 0 ले लें, फिर उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख लें। अगर वो कांस्टेंट कोएफिशिएंट का है तो कैरेक्टरिस्टिक लिखें, अगर वो वेरिएबल कोएफिशिएंट का है, आयलर है, तो उसका ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख लें। उसके मुताबिक m के वैल्यूज आ जाएगी जी। तो फिर हाँ, तो फिर अगर वो रियल एंड सेम है तो आपने yc लिखना है c1 plus c2x मल्टीप्लाइड बाई e पावर mx। जी सही है सर। सो m is 1 in this case, so actually ये उन्होंने मल्टीप्लाई किया है डायरेक्ट, इस वजह से। अच्छा जी, दिस इज एग्जांपल 5, y डबल डैश। इसको थोड़ा सा देख लें, इसको मैं, ठीक है जी, y डबल डैश प्लस y इक्वल टू 4x plus 10 sin x, y double dash plus y is equal to 4x plus y is equal to 4x plus 10 sin x। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जी। इसमें आपका दिस इज x 4x plus x। अब ये इक्वेशन होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस है? Non homogeneous. नॉन होमोजीनियस। Non-homogeneous. सो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? y is equal to yc plus yp। सो फॉर yc क्या करेंगे? इसको होमोजीनियस बना लेंगे ना। सो क्या होगा? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगा? m square plus 1। So the roots are m is equal to 0 plus minus 1 iota। So what is your yp? Sorry, what is your yc? yc ये नहीं होगा। yc आपका ये होगा।
जी सर। यस सर होगा। अच्छा जी, अब वाई पी मुझे कौन बताएगा, कैसे ले लूं? ए एक्स प्लस बी, ए ए एक्स प्लस बी यस, प्लस सी सी cos x प्लस डी साइन एक्स। plus d sin x. Yes, good, very good. So this is d sin x. This is your yp according to your right hand side. अब आप देखें कि yp का कोई टर्म yc में एग्जिस्ट कर रहा है? यस सर 4x Yes. दो टर्म्स कर रहे हैं। Yes, sir. अच्छा, तो दोनों के साथ आपने x मल्टीप्लाई करना है। सो यहाँ पे आप लिख लेंगे, आप तो अगर नोट कर रहे हैं तो लिख ले, a c cos x exist in the form of c1 cos x and d sin x exist in the form of c2 sin x. So new yp is what? This will be ax plus b plus cx cos x and plus dx sin x. This is your new yp. ये यहां तक क्लियर है जी? जी सर। अच्छा, अब आप देखेंगे तो अब कोई भी टर्म वहां पे नहीं होगा। अब आपने एस वाई पी को 2 दफा डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएशन के बाद आपने इक्वेशन 1 में वैल्यूज पुट करनी है। अब आप जहन में रख ले, कंपैरिजन किन किन चीजों का करना है आपने। ठीक है जी, तो ये ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है, मैं थोड़ा सा उस पर जा रहा हूँ। चले, ये आ गया आज दिस वन, your yc is c1 cos x plus c2 sin x. What is your yp? ax plus b plus cx cos x plus dx sin x. What is your y double dash p? Y double dash p is this one. इन्होंने y dash इसलिए नहीं लिखा क्योंकि उस क्वेश्चन में y dash की जरूरत नहीं थी। बहरहाल आप y dash करेंगे तो y double dash p आएगा। So putting the value of y double dash and y in the given equation, you will get this equation. So अब आप कंपैरिजन कर ले, कंपेयर ये कर रहे हैं, ए की वैल्यू 4 मिली, बी की 0, सी की -5, डी की वैल्यू 0। सो वाई पी इज दिस वन। कर सकते हैं ना? जी सर कर सकते हैं, आगे चलिए। सो दिस इज एग्जांपल 6। इसके लिए आप वाई पी क्या लेंगे? वाई सी तो सिंपल है, चले वाई पी क्या लेंगे आप? ax square plus bx plus c plus d जी e power x e power 3x, बिल्कुल जी। So your yp will be ax square plus bx plus c plus d e power 3x. अब आप yc जब फाइंड करेंगे तो उसमें देखेंगे yc आपका ये हुआ c1 e power 3x plus c2। सो देखिए yc, अब ये वाला टर्म जो है ये d e power 3x ये yc में मौजूद है ना? yc क्या है? yc is this one, c1 e power 3x plus c2 x e power 3x। तो ये d e power 3x वहां पे मौजूद नहीं है? है सर, मौजूद है। अच्छा, कितनी टाइम मौजूद है? 2 दफा मौजूद है। अगर x से करेंगे फिर भी मौजूद है। सो दिस विल बिकम x स्क्वायर। ये क्लियर हुआ? जी सर। अच्छा जी, तो फिर उसका डैश जी किस तरह दो? अच्छा, यहाँ पे देखो, अगर वाई पी का ये वाला टर्म आप देखें de3x, तो ये वाई सी में c1 e पावर 3x के फॉर्म में मौजूद है। ये क्लियर हुआ? यस सर। अच्छा जी, अगर आप इसके साथ मल्टीप्लाई करें,
ये अगर सर आप इसके साथ x मल्टीप्लाई तो अगेन वो सलमान मौजूद अपना माइक ऑफ करें। अच्छा, तो अगेन वो मौजूद होगा, इसलिए तो मैं dx स्क्वायर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है जी। सो इफ यू डिफरेंशिएट एंड अप्लाई द प्रोसीजर, सो ये सिंपल है। अच्छा, इस 7 एग्जांपल के लिए आपका yp क्या होगा? e पावर x x x प्लस bx x प्लस b sin x। a sin x plus b cos x multiplied by whole e power x। जी सर, मल्टीप्लिकेशन में तो मल्टीप्लाई होगा। हाँ जी बिल्कुल। सो बाकी तो सिंपल है मेरा ख्याल में, बाकी तो इसमें कुछ भी नहीं है, बाकी प्रोसीजर आप अप्लाई करें। इसके लिए आपका yp का सिलेक्शन क्या होगा? a x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जी सर। एग्जाम्पल 9 के लिए आपका सिलेक्शन क्या होगा yp का? a cos 3x प्लस b sin 3x। इसके लिए क्या होगा? चलिए ये बता दें। एग्जाम्पल 10 के लिए ax plus b यस plus c e power 2x। नहीं नहीं, ax प्लस b प्लस cx प्लस d होल मल्टीप्लाइड बाई e पावर 2x। यस सर। क्योंकि x e पावर 2x के लिए आप क्या लिखेंगे? x e पावर 2x के लिए 4x माइनस 5 को छोड़ दे, x e पावर 2x के लिए आप लिखेंगे ax प्लस b होल मल्टीप्लाइड बाई e पावर 2x। सोचो कि पहले 4x माइनस 5 है तो उसके लिए ax प्लस b लिख लेंगे, और सेकंड टर्म के लिए प्लस cx प्लस d मल्टीप्लाइड बाई e पावर 2x। ये क्लियर हुआ जी? जी सर, उसके जी साथ सर, 6x भी है तो इसमें। अच्छा जी, अच्छा जी। अच्छा, ये एग्जांपल 11 तो बिल्कुल सिंपल है। एग्जांपल 12 में क्या करेंगे? ये भी सिंपल है। ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। एक्स क्यूब के लिए क्या करेंगे? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होल मल्टीप्लाइड बाई ई पावर माइनस एक्स एंड प्लस प्लस ई इनटू ई पावर माइनस एक्स। इसके लिए क्या करेंगे? सो अब आप कर सकते हैं मेरे ख्याल में, आप मेरे ख्याल में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा वाईपी के सिलेक्शन में। सो आप यहाँ तक कर ले, स्लाइड नंबर 54 तक कर ले। ठीक है, 17 एग्जांपल्स हैं, 17 एग्जांपल्स हैं। ठीक है जी। सो 2 टॉपिक्स हमने कर लिए। कौन कौन से टॉपिक्स? हमने कॉशी यूलर इक्वेशन पढ़ा, हमने अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट मेथड पढ़ा, और नॉन लीनियर इक्वेशन जो हैं ये आगे भी आ जाएंगे, इसकी इतनी अभी ज़रूरत नहीं है इस पोजीशन पे। सो वी हैव स्टडीड द कॉशी यूलर इक्वेशन, अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट मेथड। सो कॉशी यूलर इक्वेशन हमने ये पढ़ा कि ये कौन सा इक्वेशन कॉशी यूलर इक्वेशन होगा। तो हमने ये पढ़ा कि जिस ऑर्डर का डेरिवेटिव होगा, अगर उसी डिग्री की पॉलिनोमियल उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो वो कॉशी यूलर इक्वेशन कहलाता है। उसका सॉल्यूशन हमने सर्च किया y = x पावर m फॉर्म में। फिर आपके पास जब आप y = x पावर m पुट करेंगे तो एक एक्सिलरी इक्वेशन बनता है, उसका जनरल फॉर्म है सेकंड ऑर्डर के लिए am² प्लस b माइनस a इंटू m प्लस c = 0। उसके दो रूट्स आते थे, वन m1 एंड दूसरा m2। अगर ये m1 और m2 रियल एंड डिस्टिंक्ट हुए तो फिर सॉल्यूशन कैसे डेवलप करेंगे? अगर रियल एंड रिपीटेड हुए तो फिर कैसे करेंगे? अगर कॉम्प्लेक्स हुए तो फिर कैसे करेंगे? नाउ आवर मेन टारगेट, हमने कॉशी यूलर इक्वेशन पढ़ा
हमने हमने होमोजीनियस इक्वेशन इससे पहले 2-3 एक्सरसाइजेज में पढ़ लिए, लेकिन वो हमने क्यों पढ़े? बिकॉज फॉर फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में एक कंट्रीब्यूशन होता है yc का, दूसरा होता है yp का। सो yc मींस होमोजीनियस का सॉल्यूशन। सो हमेशा मोस्टली जो सिस्टम बनते हैं वो नॉन होमोजीनियस बनते हैं, क्योंकि किसी भी प्रोसेस में इंटरनल जो चेंजेस होते हैं, इंटरनल सोर्स जो एक्सटर्नल सोर्स जो होता है वो हमेशा मोस्टली कंट्रीब्यूट करता है। सो देयरफॉर इफ यू आर गोइंग टू मॉडल ए प्रोसेस, so there will be, in most cases there will be a source term, that is the external contribution inside your system. So therefore if you are modeling a problem, the differential equation will be non-homogeneous. So for non-homogeneous system you will find the particular solution yp, and for particular solution we have studied one method, that is undetermined coefficient method. We will also study another method. This method has some restriction, that is you will look to the right hand side function and you will select yp, then you will update your yp. After updating yp you will put it in the given differential equation and you will make comparison of coefficient, and you will find these unknowns constant a, b, c, and you will obtain at the end yp. But for every gx, for every non-homogeneous differential equation, you are not able to find yp using this undetermined coefficient method. इसके बारे में आप काफ़ी डिटेल से पढ़ चुके हैं कि क्यों हम yp फाइंड नहीं कर सकते हर एक डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए यूजिंग दिस मेथड, बिकॉज वी आर नॉट एबल टू सेलेक्ट yp. अपडेट करना एक और बात है, सेलेक्ट करना एक और बात है. हम अगर सेलेक्ट नहीं कर सकते तो उसको अपडेट कैसे करेंगे, फिर उसमें कोएफिशिएंट कैसे फाइंड करेंगे. सो मेन थिंग इज इन दिस मेथड इज हाउ टू सेलेक्ट yp. सो अगर हम सेलेक्ट नहीं कर सकते फॉर log x, फॉर कोसेकेंड x, फॉर e पावर x स्क्वायर even, e पावर x स्क्वायर, e power log x, e power sin x. So there are most functions for which we are not able to select yp. So this method is not a generalized method. The domain of this method is small. So therefore we will move to develop another method whose domain is large, and using this method we will be able to solve most of the problems. सो हम एक और मेथड पे हमें जाना पड़ेगा ताकि हम अपने नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशंस के डोमेन को थोड़ा सा बेहतर कर सके. इस मेथड में इतनी पावर नहीं है कि हर डिफरेंशियल इक्वेशन को डील कर सके. सो वी नीड टू मूव फॉरवर्ड टू स्टडी अनदर मेथड फॉर फाइंडिंग द पार्टिकुलर सॉल्यूशन फॉर ए नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. So in next class, inshallah, we will move to that method to study the particular solution for finding non-homogeneous differential equation. जी, अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं. लो, आप मेरे साथ हैं? यस सर. अच्छा जी, तो आप अगर हैं कोई तो पूछ सकते हैं. नो क्वेश्चन सर. अच्छा जी, अब मुझे ये आप बता दें कि कोई क्लास के दौरान आपका कोई प्रॉब्लम आ रहा था नेट वगैरह का? नो सर. यस सर, हमारे तरफ तो आ रहा था सर, बहुत मसला है. अच्छा, आप मोबाइल से कर रहे हैं? नो सर, मसला बहुत है, आवाज का बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा. अच्छा जी. जी हाँ सर. फिर मैं ये वीडियो शेयर करूंगा तो आप इसको देख ले फिर. अच्छा, अब आपका एक्सपीरियंस ऑनलाइन क्लास के मुताबिक क्या है?
सर बाकी सर अच्छा है, लेकिन आवाज एक्सपीरियंस का बहुत मसला होता है। अच्छा। आ, 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 आपको इस क्लास में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ? सर हुआ ना, प्रॉब्लम किस था इसमें भी। किस चीज़ का? नेट का? नेट का नहीं सर, आवाज बहुत हैंग हो रहा है। तो वही नेट का प्रॉब्लम है ना? हाँ सर, शायद नेट का होगा। हाँ हाँ। तो सर एक ये मेरी तरफ से नहीं है, ये आपका अपना नेट सर का। ये कुछ यूलर इक्वेशन तो समझा, बाकी बाकी इसके बाद कुछ भी नहीं समझा। ये आप दोबारा देखेंगे तो अंडरस्टैंड कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी। कोई क्वेश्चन तो नहीं है क्लास के ओके रिलेटेड? सर जी सर एक क्वेश्चन है, अगर आप सुन रहे हैं सर। जी। सर ट्राइगोनोमेट्रिक में अगर जेएक्स की जगह टेंजेंट एक्स आ जाए तो फिर इसका सलूशन पॉसिबल क्यों नहीं है सर? इसकी कोई वजह असल थी? में हमने उसके लिए वाईपी नहीं पढ़ा। एक वो और मेथड मुमकिन तो है ना सर? एक और मेथड नहीं है ना असल में। फिर आपका अगर आप ये वाईपी उन्होंने ऐसे सिलेक्ट किए हैं जिसके साथ अगर ए बी सी कांस्टेंट फिर आप फाइंड भी कर सके ना। ये गेस मेथड है, ये उन्होंने ट्राई किए हैं फिर मिले हैं उनको, तो इस वजह से ये कह रहे हैं कि ये पॉसिबिलिटीज हैं। अदरवाइज अगर आप सीकंड एक्स लेंगे तो ये 1 ओवर काज एक्स आएगा। अगर आप कहते हैं कि काज एक्स की जगह मैं 1 ओवर ए काज एक्स प्लस बी साइन एक्स लिखता हूँ तो फिर ए बी सी फाइंड नहीं होंगे। उन्होंने ट्राई किए हैं। सो जहां तक हमने वाईपी पढ़ा वहां तक ये काम कर सकता है, इससे आगे काम नहीं कर सकता। इसका डोमेन ही इतना है, इसका डोमेन इससे ज्यादा नहीं है। सो इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि हमें एक और मेथड पे जाना पड़ेगा ताकि हम अपने डोमेन को थोड़ा सा एक्सपेंड कर सकें एंड एंड फिर हम एबल होंगे कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को हैंडल करने में। दैट इज नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है जी। तो आप अटेंडेंस लगा लें, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में एक्सक्यूज मी मिलेंगे। सर। जी जी जी। सर वो असाइनमेंट के बारे में हमने आपको बताया था कि सर गूगल ड्राइव पे अगर नहीं होता तो आपने कहा कि मेल कर दे। आपने मेल किया है? नो सर अभी तक तो नहीं किया सर, कोशिश करेंगे। चल आप कोशिश करें, आप साइट पे अपलोड करें तो मेरे साथ रिकॉर्ड सर मेल में असल में फिर जी। अभी तक ऑनलाइन क्लास में सर मैंने अभी तक कोई असाइनमेंट दूसरी